गाइस वेलकम बैक टू क्रैक एंड सिट। आज हम करने वाला है टीचिंग एप्टीट्यूड का यूनिट 3 साइंस। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइस। ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन इस यूनिट से आ रहा है। सो आगे चलते हैं, लेट्स सी व्हाट इज द कंपोनेंट्स ऑफ और सब टॉपिक्स ऑफ दिस यूनिट। तीन सब टॉपिक्स है। फर्स्ट वन बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचुरल फिनोमेना, सेकंड है फेमस इंडियन साइंटिस्ट एंड वुमेन साइंटिस्ट, third है current information such as COVID technology and programs in science. This is an old syllabus guys, that's why current information such as COVID is there. ठीक है, so actually maybe some of you guys are thinking why we are jumping to unit 3 from unit 7. एक्चुअली मैंने पहले भी बोल दिया था, दिस इज ए मोर मेमोरी इंटेंसिव यूनिट, इसलिए हमने इसको लास्ट में प्लेस किया। ठीक है, क्योंकि ज्यादा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन तुमको लाइक याद करने के लिए। ठीक है, सो लेकिन टुडे वी विल बी फोकसिंग ऑन द लॉजिक बेस्ड पार्ट ऑफ दिस यूनिट। इससे पहले मुझे तुम लोगों का थोड़ा क्वेश्चंस क्लियर करना है। ठीक है, सो मे बी इफ यू आर हियर जस्ट फॉर द वीडियो यू कैन स्किप टू 4 to 5 minutes। ठीक है, आगे चलते हैं, लेट्स सी व्हाट्स द पहले क्वेश्चन गाइस। सर प्लीज हिंदी में वीडियो बनाइए। मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं लाइक पहले भी बोल दिया था मैं हिंदी स्पीकर नहीं हूँ, इसलिए मुझे भी थोड़ा दिक्कत है, लेकिन मैं ट्राई करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत ऐसा लैंग्वेज के वजह से कोई दिक्कत आ रहा तो कमेंट सेक्शन में डाल दो, सो मुझे थोड़ा आइडिया मिलेगा तुमको समझ में आ रहा है या नहीं। ठीक है, सो ट्राई करता हूँ। सेकंड वन, प्लीज मेक ए स्ट्रेटेजी वीडियो फॉर द एग्जाम। ठीक है, वो हाउ टू प्रिपेयर एंड हाउ मेनी डेज वी शुड गिव टू वन चैप्टर, ऐसा ऐसा। एक्चुअली ये टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था, एक स्ट्रेटेजी वीडियो, लेकिन आई विल explain some more because I believe this is very important because exam is come. ठीक है, so let me kind of explain this to you guys। हमारे पास हमारे पास 160 क्वेश्चंस हैं ये एनसीटी में। Like actually in NCET 2025 there are 181 questions out of which हमको 160 करना है। ठीक है, and you are having, अरे पेन नहीं वर्क कर रहा है, you have 180 minutes, 180 minutes। ठीक है ना, दिस इज दिस सिचुएशन। हमको एक क्वेश्चन में लगभग 1 मिनट देना पड़ेगा। ठीक है, आई लाइक ऐसे हमको सोचना पड़ेगा 1 question is equal to 1 minute। लेकिन एक क्वेश्चन लाइक सब्जेक्ट्स लाइक टीचिंग एप्टीट्यूड, लैंग्वेज पेन में थोड़ा दिक्कत है गाइस, लैंग्वेज 1 and 2 और क्या है, और जीटी। ठीक है, इसमें तुमको ऐसा क्वेश्चंस भी आएगा in which it's like memory based, like you don't have to spend a lot of time in those questions। It's like if you know the answer you know, if you don't know you don't know, there is nothing to think that much। ठीक है, ऐसा क्वेश्चंस भी आ रहा है। देयर आर पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स अबाउट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। पॉजिटिव ये है कि तुमको टाइम सेव कर सकता है। ठीक है, एंड यू कैन यूज दोस टाइम टू सॉल्व लाइक बिग प्रॉब्लम्स और टाइम इंटेंसिव प्रॉब्लम्स इन पीसीएम। ठीक है, दैट इज वन पॉजिटिव थिंग अबाउट इट। द नेगेटिव थिंग ये कि तुमको like you can't make the answers like max में एक क्वेश्चन आ रहा है, you can maybe think and do it and at least try that in the exam hall itself, लेकिन इस kind of like this kind of questions में तुमको ये नहीं कर सकता है। क्यों? लेकिन some of them are memory based। ठीक है, and I want to tell you guys one more very 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 important thing guys। देख लो, हमारे वो पीसीएम में आज पेन को थोड़ा दिक्कत है गाइस, लेट मी चेक 1 सेकेंड। ठीक है गाइस, आई थिंक ये क्लियर हो गया क्या। हमारे पास पीसीएम में इट्स लाइक 3 into 25 क्वेश्चंस इज इक्वल टू 75 क्वेश्चंस। एंड वो लैंग्वेज में तुमको लाइक लैंग्वेज 2 लैंग्वेज है, इसमें 2 into 20 क्वेश्चंस आ रहा है इज इक्वल टू 40। टीचिंग एप्टीट्यूड में कितना आ रहा है, 20 क्वेश्चंस आ रहा है। ये जीटी में 25 क्वेश्चंस आ रहे हैं।
ठीक है, दिस इज आवर डिस्ट्रीब्यूशन एंड दिस इज इक्वल टू 85 क्वेश्चंस गाइस, 85 क्वेश्चंस व्हिच इज, ये 75 से ज्यादा है ना। सो पीसीएम से ज्यादा क्वेश्चंस किस सब्जेक्ट से आ रहा है। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि बहुत लोग, मैं बहुत सारे पहले वीडियोस में भी ये बोल दिया था, लेकिन बहुत सारे लोग, मेरे जैसे लोग, मैं क्या किया था, मैंने जेई के लिए रिपीट किया था। आई जस्ट रोट दिस एग्जाम बिकॉज दैट वाज आल्सो द फर्स्ट टाइम व्हेन दे इंट्रोड्यूस दिस एग्जाम। मुझे इस एग्जाम के बारे में कुछ आइडिया नहीं था, मुझे पता भी नहीं था भाई वो टीचिंग एप्टीट्यूड है, जीटीए लैंग्वेज है, आई डोंट इवन केयर्ड अबाउट इट। मैंने पीसीएम किया एंड दिस क्वेश्चंस आई जस्ट गो थ्रू इट एंड बट ऑफ कोर्स आई वाज इन प्रिपेयर्ड फॉर दैट, इसलिए मुझे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस वो सब नहीं आ रहा था। ठीक है, सो आई गिव इम्पोर्टेंस टू पीसीएम क्वेश्चंस। लेकिन उस टाइम क्या था, उस टाइम वो पहली बार था इसलिए उतना पॉपुलर नहीं था, कंपटीशन कम था। लेकिन दिस टाइम ऐसा नहीं है, बहुत लोगों को पता, लाइक दे न्यू, लाइक दे ऑलरेडी नो अबाउट दिस थिंग। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू गाइस टू गिव इम्पोर्टेंस टू दिस 85 मार्क्स टू। ठीक है, क्योंकि वो नीट वाला और जेई वाला बच्चा इसको उतना ध्यान नहीं देगा। ठीक है, सो दैट्स इट गाइस। एंड अबाउट दिस पीसीएम क्वेश्चंस, एक और क्वेश्चन आया था, लेट मी गो टू दैट थिंग, देन you will get a more understanding. Oh, it's from Ankita Banerjee. Hope you are doing well. I am reaching out because I am trying to get a clear understanding of the NCT exams difficulty level compared to other major exams like ये भी दिया है, एक जेई सीयूटी ऐसा ऐसा। ठीक है, the one major difference between the questions and the level of questions in NCET is it's limited to +2. Unlike JEE, it's just limited to +2 syllabus. ठीक है ना। सो थिंग इज सीयूईटी में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, सीयूईटी इज आल्सो लिमिटेड टू +2 syllabus, right? But the thing is, the best way to, maybe I think you are asking this because you are studying for some other exams, right? But वो completely ठीक है। If you are planning to write this exam, I will strongly recommend you to go through some of our lectures, or go through the PYQ once. Then you will get an understand, like clear cut understanding. I can tell that it's like almost like JEE, it's almost like CUT, उसमें actually कुछ मतलब ही नहीं है। ठीक है, because our exam, like these are all exams conducted by the NTA, so there will be some similarities. लेकिन you will get clarity about these things when you are really going through this kind of questions। ठीक है, सो उतना टाइम नहीं लगता है भाई, सिर्फ 2 घंटा, एंड इफ यू आर जस्ट रीडिंग इट विल ओनली टेक ऑलमोस्ट 45 मिनट्स। उससे तुमको पूरा आइडिया मिल जाएगा कैसे, लाइक किस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है, पीसीएम का लेवल क्या है। एंड वन मोर थिंग इज, ये जेई में ये टीचिंग एप्टीट्यूड जीटी वो सब नहीं है, लैंग्वेज बिल्कुल नहीं है। सो हमको ये एग्जाम जेई से कैसे कंपेयर कर सकता हूँ। आर्ट्स आई टोल्ड बिफोर, ये पीसीएम से सिर्फ 75 मार्क्स आ रहा है, जेई इज ओनली लाइक उस like 75%, like 75 questions out of 160 is almost less than 50% guys। लेकिन जेई में पूरा 100% क्वेश्चन ये पीसीएम से आ रहा है। सो हाउ कैन वी कंपेयर, दीज आर डिफरेंट एग्जाम्स गाइस। लेकिन मुझे पता चल रहा है, तो लाइक तुम लोगों ने क्या what you guys want to know, but the thing, the best advice for that is go through one previous year questions once। ठीक है, so yeah, I hope I just give you a glimpse of this kind of strategies and all. And if you want more information, just let me know in the comment section below. I will try to make a complete video. And this thing like how many days should you dedicate to one चैप्टर, उसमें अभी उतना मतलब नहीं है गाइस, क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पास 1 महीना टाइम है अभी। ठीक है, सो एक यूनिट ऐसे डिवाइड करने से पहले स्टार्ट करो। ठीक है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, हमारा लेक्चर भी देख सकता है, क्योंकि वी आर एक्सक्लूसिवली प्रिपेयरिंग यू गाइस फॉर एनसीईटी एग्जामिनेशन। सो इट, आई बिलीव दैट इट विल बी वैल्यूएबल फॉर यू गाइस। ठीक है, सो ऐसा गाइस, बहुत लोगों के ये क्वेश्चन भी आया था कि अभी पढ़ने से
कर सकता है या नहीं, क्रैक कर सकता है या नहीं, आईआईटी आ सकता है या नहीं। मेरा आंसर ये कि हो सकता है गाइस। इफ यू हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर +2 सिलेबस, अभी भी हो सकता है गाइस। ट्रस्ट मी, 1 महीना बचा हुआ है। You guys can clear this and you guys can come to IITs and even as our juniors in IT KGP में भी आ सकता है। So trust yourself, काम करो। इतना like हमारा प्रॉब्लम है कि हम like we will be motivated for a short term। ठीक है, हमको ये नहीं चाहिए पूरा 1 महीने तक हमको मोटिवेशन रहना चाहिए। ठीक है, this is my only advice and yeah, that's it। एंड एक क्वेश्चन भी आया था, भैया at what marks you got IIT KGP and how much marks are needed for general for IIT KGP, please respond at internet is full of rumors। मुझे समझ रहा है कि इंटरनेट में बहुत फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन के सवाल मैं अभी नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि वी विल बी आई विल बी आंसरिंग दिस आफ्टर योर एग्जामिनेशन। ठीक है, क्योंकि इफ आई एम टेलिंग दिस राइट नाउ ना, इट विल बी लाइक मिसगाइडिंग यू गाइस। क्योंकि मैंने पहले भी बोल दिया था, जब मैंने एग्जाम दिया उस टाइम कंपटीशन कम था। ठीक है, अभी कंपटीशन लाइक इट इंक्रीज डेफिनेटली, सो वी हैव टू एम फॉर मोर मार्क्स। I don't want you guys to I don't want you guys to be restricted in mind, I don't want you guys to put a limit on the marks you have to get। ठीक है, इसीलिए ये मैं ये क्वेश्चन का आंसर तुमको लास्ट में दूंगा एग्जाम के बाद। ठीक है, एंड बट आई विल गिव यू एन आइडिया अबाउट द स्कोर यू शुड एम फॉर बिकॉज दैट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, यू हैव टू एम फॉर एटलीस्ट general you are in general category, so for IITs at least 380। ठीक है, मोर देन 380 को टारगेट करो, ऐसे पढ़ो। ठीक है, लाइक इफ यू आर गेटिंग 400 प्लस इट्स बेस्ट, 400 प्लस बहुत सेफ जोन है। ठीक है, लेकिन इफ यू आर एमिंग फॉर 380 प्लस, 350 भी काइंड ऑफ ठीक ही है, लेकिन एम फॉर 380 और 400 प्लस, आराम से हो जाएगा IIT की। ठीक है, so that's it guys, and now let's come to the best question from the question I felt is the most important question from these comments। भाई आप जो करा रहे हो उससे मैं क्वेश्चंस बनाएगा, इतने ही पढ़ना इनफ होगा। ठीक है, I should address this because this is very important। ठीक है, बिकॉज गाइस मैं टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में बोल रहा हूँ अभी। टीचिंग एप्टीट्यूड ऐसा सब्जेक्ट है कि मैं इफ यू आर फॉलोइंग माय लेक्चर्स, मैं ये पहले भी बोल दिया था, इसमें अनप्रडिक्टेबिलिटी ज्यादा है कुछ क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ऐसा है कि मेमोरी बेस्ड है, इफ यू नो दिस थिंग यू नो यू कैन आंसर। ठीक है, लेकिन कुछ सम क्वेश्चंस उसमें ये प्रॉब्लम की बहुत कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, लेकिन उस काइंड ऑफ क्वेश्चन को कैसे टैकल करेगा हमने guys? Even if those questions are unpredictable, you can easily do it by using your logic and common sense। So when I'm doing my lectures, I am really trying to make you understand the path or process of doing those questions। ठीक है, so the thing is पढ़ाई enough मतलब I'm sure that if you are following this teaching aptitude questions lectures completely, you will be able to score at least 15 questions। ठीक है, 15 questions in NCET 2025 at least। ठीक है, because we are discussing memory based questions and the logic based, this is a knack। ठीक है, this is a knack how to do questions। so this ये मेरा आंसर है guys। enough मतलब there is no end for learning, लेकिन हमको ये कहना चाहता है कि हमको अच्छे मार्क्स चाहिए। कॉम्पिटिटिव एक्सरसाइज में क्या चाहिए? मार्क्स चाहिए। I'm damn sure that you will be getting good marks if you're following these lectures। I think that's enough and that answers your question। ठीक है ना?
सो आगे चलता है, वो टाइम हो गया गाइस, हमको हमारा पोर्शन में भी जाना है, ये भी कंप्लीट करना है, ठीक है। सो लेट्स गो टू यूनिट 3, आगे चलते हैं। सो और मे बी यू गाइस ऑलरेडी फॉरगॉट व्हाट्स द 3 सब टॉपिक्स है, एंड वी विल बी फोकसिंग मोर ऑन दीस आर मेमोरी बेस्ड थिंग्स, ठीक है। वी विल बी फोकसिंग मोर ऑन this part, not exactly this part, like this logical part, ठीक है, in this lecture. So yeah, आगे चलता है, let's directly go to a question in order to have a clear cut understanding about the kind of questions can be asked from this lesson, like unit. Which of the following is a prerequisite for any scientific discovery? Formulation of hypothesis है, conducting experiments है, observation है, identification of the problem भी है, ठीक है। Like, the key point to note here is it is asking for prerequisite for any scientific discovery, ठीक है, any scientific discovery. So what I'm going to do, this is an important portion, थोड़ा theory भी है, so I am I kind of prepared a a chart, a, if you are considering a scientific discovery, what the things you are doing, ठीक है। So this is a basic example of that. ओ एक सेकंड वेट गाइस, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, सॉरी गाइस, एक टेक्निकल इशू आया था। सो या, these are the journey of a scientific discovery, ठीक है। This is not clear cut or concrete ideas, this just gives you an idea कैसे एक scientific discovery आ रहा है। First thing है observation, like I have also given the example, let's go through that. Identify a problem or phenomenon to study, ठीक है। हमने पहले सुना है वो न्यूटन वाला observation theory. He was sitting under a apple tree है, apple नीचे गिरा था, वो ने सोचा कि क्यों ये ऊपर नहीं जा रहा, क्यों नीचे आ रहा है ना। This is observation. This is not just limited to observation, this is all like related to observation and thinking. हम सब ये ऑब्जर्व कर सकता है, लेकिन it's all about thinking. What differentiates a scientist and a common man is thinking. And yeah, there are some terms like scientific inquiry and scientific temper that is also important in this unit, we will be covering in the next slide. So let's come to this word. Why do apple fall from trees? ये है observation. देन है क्वेश्चनिंग एंड बैकग्राउंड रिसर्च। बैकग्राउंड रिसर्च का मतलब ये कि लाइक मे बी आई एम थिंकिंग अबाउट इट राइट नाउ, न्यूटन ने पहले कर चुका है, लेकिन मुझे वो ग्रेविटेशन थ्योरी के बारे में पता नहीं है। मैं अभी बोल रहा कि हाँ, ये कोकोनट ट्री से कोकोनट क्यों नीचे जा रहा है, लेकिन अभी ये सॉल्व्ड है, ठीक है। दैट्स व्हाई बैकग्राउंड रिसर्च। इफ आई एम थिंकिंग अबाउट दिस, इफ आई एम स्टडीइंग अबाउट द थियरीज रिलेटिंग टू दिस, मुझे I can understand that, oh ये already solved है, न्यूटन ने किया है ये पहले, so I can understand. I don't want I have to explain and I don't have to prove it right now, तो already हो चुका है। So in order to understand that, you background research is important, and questioning also. Like for example, what causes objects to fall towards the ground, cause questioning, ठीक है। and आगे चलता है hypothesis. You have post a testable explanation or prediction, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये बोला कि ये फोर्स है, थोड़ा एक फोर्स है इसीलिए चीज नीचे आ रहा है, ठीक है। एंड देन कम्स एक्सपेरिमेंटेशन। हाइपोथेसिस एवरीबडी कैन टेल समथिंग ना। इफ आई एम टेलिंग एर्थ इज प्लेन, अभी भी थोड़ा लोग है प्लेन एर्थ थियरी ऐसा कुछ है, सो वो ये बोल रहा है कि वो बोल रहा है कि अर्थ प्लेन है, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता। एक्सपेरिमेंट्स हैव प्रूव्ड दैट अर्थ इज ए spherical shape, not exactly spherical, it's actually a geoid shape, ठीक है। वो एक्चुअली प्रूव्ड है, लेकिन ये फ्लैट अर्थ थियरी कभी नहीं प्रूव कर सकता है, ठीक है। इसलिए हमको एक्सपेरिमेंटेशन चाहिए प्रूव करने के लिए। एंड देन कम्स डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस। कलेक्ट डाटा फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है, वी आर कलेक्टिंग दैट डाटा। हम सबको पता है न्यूटन्स का लॉस है, वो कैसे हम how we have reached to that thing. We have to analyze the data from our experiments, ठीक है।
After this collection of data, we can prove or disprove our hypothesis. Okay, so there comes conclusion and formulation. We are concluding that whether it's right or wrong, and we are formulating our hypothesis. Okay, na? So yeah, then we have communication. That's a kind of important and limited, limited to scientific community, because we will publish, okay, those things. Actually, in our IIT Kharagpur, I was also a part of a research project, and we are trying to publish it. You will be doing that too when you are coming to college, like IITs or NITs or IRIs. तो उसके बारे में अभी उतना मत सोचो. You will be doing it too if you are interested in research. ठीक है? So yeah, that's it, guys. This is a basic outline of a scientific discovery. लो, so क्वेश्चन क्या है? हम क्वेश्चन करने लिए ये सब बताया ना. क्वेश्चन क्या है? Which among the following is a prerequisite for any scientific discovery? Formulation of hypothesis है, हमने ये देख चुका है. Then conducting experiments है, observation है, identification of the problem है. Actually, I will tell you guys, this is a confusion question. कि हमको कंफ्यूज हो सकता है कि ये सब आ रहा है, उसमें क्या चूज करेगा. But I have told you guys before, we have to choose the best possible answer in this kind of questions and in, of course, competitive examinations. ठीक है ना? So इसमें ज्यादा कंफ्यूजिंग है कि ये ऑब्जर्वेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम. लेकिन गाइस क्वेश्चंस में इसीलिए मैंने अंडरलाइन किया, एनी साइंटिफिक थियरी ऐसे दिया है. So any scientific theory is like scientific discovery isn't possible without observation, and this is kind of first step, है ना? And like it's a prerequisite, because without observation we are just watching this world. Like observation is a kind of very basic thing for scientists. So that's why I told this is kind of logic based thinking. Even if you know the answer, even if you know the concept, even if you know the theory, it's kind of like the options can be confusing. So here you have to think it like this way, best possible answer, and that goes to observation. ये गलत गया, ठीक है. दिस क्वेश्चन आज पेन को थोड़ा प्रॉब्लम है गाइस, अच्छे से नहीं वर्क कर रहा है, ठीक है. वो हियर द ऑब्जर्वेशन इज द आंसर, ठीक है. So yeah, that's it. Identification of a problem is also important, but without observation how can you identify, है ना? So इसलिए आगे चलते हैं. Hope this is like you understand this. Just go through this so that you will get an idea about how these things behind scientific discovery works. I know like some of you guys already have an idea, but still, ठीक है. आगे चलता है. Let's go to a question. This is a very simple question, guys. I put this question in order to let you know, guys, these kind of questions can also come. ठीक है. ये क्वेश्चन में क्या है? Which of the following is direct hands-on experience among children? A group of students discussing a textbook. Ramu and Ravi of class 6 are doing experiment with materials and apparatus. One group in class is watching YouTube videos about science program. Seema is observing a science diagram on a chart. Hands-on experience. Okay. And here we have doing experiment with materials and apparatus. Of course, this is a forward question, guys. I hope you are understanding this. And if this kind of questions comes now, you should never miss this. And इसलिए मैं बोल रहा है कि तुमको टीचिंग एप्टीट्यूड और जीटी वो सबको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारा ऐसा क्वेश्चंस भी आ रहा है, वो लाइक बहुत आसान है सब क्वेश्चंस, ठीक है. क्वेश्चंस भी आएगा, बिल्कुल आएगा, लेकिन इस तरीके से क्वेश्चंस भी आ रहा है. सो नेवर स्किप गाइस, ठीक है. सो या आई होप दिस मेक्स यू हैप्पी. आगे चलते हैं टू ए क्वेश्चन व्हिच डिमांड्स सम थियरी. Deductive reasoning is a reasoning based on. So the theory I'm talking about, we have two kinds of reasoning. Maybe तुमको ये ना पता है. We have also studied in maths. Like I will explain. But I will explain again. We have inductive reasoning and we have
deductive reasoning. And you guys have to have a understanding about these two different terms, because this is also important in the unit 4 also. And this is a potential question, guys. Maybe one question can come from this area. Okay, so क्या है ये deductive reasoning? This is a simple explanation of that. I have also given you guys an example, okay, for so that you will get a more understanding. Simply, you can pause this video and read this, but I will explain this to you simply. Deductive reasoning क्या है? We are using a top to bottom approach. हम ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है. I will explain. First, we are saying that all humans are mammals. है ना? All humans are mammals. I am a human. मैं इंसान हूँ, इसीलिए मैं भी एक mammal हूँ. ठीक है? This is the example of a deductive reasoning. We are coming from a generalized concept to generalized to specific. ठीक है? Generalized to specific. ठीक है? I hope this is clear to you guys. This is easy, guys. ठीक है? Generalized, specific. Sub, like we can also tell, like for example, like mm, but guys, there can be some problems also like this. लेकिन मुझे बोल सकता है कि हर इंसान को 2 अंक है, इसलिए मुझे भी 2 अंक है. लेकिन ये भी प्रॉब्लम हो सकता है कि मे बी सम ऑफ the humans are also not having 2 eyes. ठीक है? लेकिन ये mammals एग्जाम्पल में वो प्रॉब्लम नहीं आ रहा है. क्यों? हम सब मैमल है. Humans are mammals, and we can also uh, tell this about our DNA. हर इंसान के अंदर DNA है, इसलिए मेरे अंदर भी DNA है. ठीक है? Hope you are getting the concept behind this deductive reasoning. आगे चलते हैं. Let's go to inductive reasoning. Inductive reasoning में क्या है? This is the reverse, guys. It's bottom to top approach. Bottom. अरे पेन को आज क्या दिक्कत है भाई? ठीक है? Bottom to top approach and specific to generalized. ठीक है? फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग दैट मैंने कुछ चीजों को देखा, ये एंड में ये बोल रहा है कि सब ऐसा है. फॉर एग्जाम्पल ऑल फैंस आई हैव सीन आर व्हाइट, इसलिए सब फैंस व्हाइट ही है. ठीक है? एक्चुअली दिस कैन बी रॉन्ग एंड दिस कैन बी डिस्प्रूव्ड विथ single example. If I'm seeing a black swan, I can easily reject this inductive reasoning hypothesis. है ना? So yeah, that's it, guys. Hope you got an idea. You can pause this video and read this. Okay, again, I just want you to understand it in a simple way. So it's a bottom to top approach. The inductive, like deductive reasoning is a we are reducing. Okay, like एक ऐसा है, एक ऐसा है. ठीक है? I hope you got this idea. This is bottom to top inductive reasoning. And हमारा क्वेश्चन में क्या देना दे रहा है? Question में deductive reasoning is a reasoning based on facts, reasons, activities and methods. So let's go to deductive reasoning once again. इसमें क्या क्या दे रहा है? Deductive reasoning is a logical process in which a specific conclusion is drawn from general premises or facts that are assumed to be true. ठीक है? So let's think about it also. Top to bottom approach. ठीक है? So we know some fact. ये क्या है? All humans are mammal is a fact, guys, and that's why I can say that I'm a mammal. ठीक है ना? So that's why it's based on facts. ठीक है? I hope you are understanding this. ये अच्छे तरीके से हमको समझना है, क्योंकि maybe a question from this can come. इसलिए just post this video and think like you whether you got this idea or not. If you haven't got this, just backward like 2 minutes and watch it again.
sure that you will be getting this idea. ये बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, ये कभी नहीं हमको छोड़ना है, ठीक है। सो या दैट्स इट गाइस। एक फिर भी आगे चलता है, लेट्स गो टू वन क्वेश्चन एंड वी विल डिस्कसिंग सम थियरी आल्सो। The availability of a person to critically observe, describe, explain and predict natural phenomena is called। मैं पहले भी बोल दिया था, हम आगे लाइक आगे आने वाला स्लाइड्स में वो साइंटिफिक टेम्पर और साइंटिफिक इंक्वायरी वो सब के बारे में बोल दूंगा। This is it, guys, this is our last question also, so it's important also, ठीक है। में क्या क्या है, साइंटिफिक टेम्पर है, साइंटिफिक इंक्वायरी है, साइंटिफिक लिटरेसी है, साइंटिफिक एटीट्यूड है। मे बी यू गाइस आर गेटिंग कंफ्यूज, सब में साइंटिफिक है, ये सब क्या क्या है, हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन देम, इसमें डिफरेंस क्या है। डोंट वरी गाइस, मैं हूं ना, लेट्स सी and I will make you understand this in a simple way as we have done with detective and inductive reason। साइंटिफिक टेम्पर इसका मतलब है इट्स अ माइंडसेट ऑफ लॉजिक। साइंटिफिक टेम्पर, ठीक है, माइंडसेट ऑफ लॉजिक, रीजनिंग एंड एविडेंस टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज फिनोमेना, ठीक है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। लाइक द माइंडसेट do science. Simply, you can think of it in this way. And the scientific inquiries is more about asking scientific question, investigating, ठीक है। नॉट अबाउट योर वो फिल्म वाले इन्वेस्टिगेशन नहीं है, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, ये क्यों आ रहा है इससे, दैट काइंड ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी, ठीक है। साइंटिफिक लिटरेसी क्या है, लिटरेसी का मतलब सबको पता ही होगा, है ना। This is the ability to understand and use scientific concepts to make informed decisions in daily life। Scientific literacy मतलब it's related to literacy guys। The ability to understand, literacy क्या है, तो ability to read and write ऐसा है ना। It's like ability to understand science। If the common literacy in language is the ability to understand words, this is to understand science, the world around us, ठीक है। दिस इज साइंटिफिक लिटरेसी। साइंटिफिक एटीट्यूड क्या है, ये माइंडसेट है, माइंडसेट दैट वैल्यू एविडेंस, ओपन माइंडेडनेस गाइस। क्योंकि कुछ लोग ऐसा है कि वो कभी नहीं चेंज करना चाहता है, लेकिन वो साइंटिफिक एटीट्यूड ना, उस लाइक दोस गाइस लाइक दैट, उसको प्रूफ चाहिए, एविडेंस चाहिए, देन दे विल चेंज। दे आर ओपन माइंडेड, ठीक है, एंड दे विल बी आल्सो क्वेश्चनिंग थिंग्स। Okay, I hope this is clear to you. Just post the video guys and go through it, and I will be also sharing this PPT in our Telegram group, so don't worry। लेकिन अभी एक बार अच्छे से पढ़ ली, ठीक है। Now let's go to the question। Question क्या है, ability of a person to critically observe, describe, explain and predict natural phenomena is called। ये बिल्कुल साइंटिफिक लिटरेसी नहीं है ना। एटीट्यूड, critically observe, describe, explain and predict natural phenomena। Scientific attitude is more about, हमने बोला था ना, open mindedness for evidence, believing in evidence based theories। So as I told before, we have to get best possible answer, इसलिए ये भी हमको छोड़ सकता है। और क्या आ रहा है, साइंटिफिक टेम्पर आ रहा है, साइंटिफिक इंक्वायरी भी आ रहा है। साइंटिफिक इंक्वायरी में क्या है, इट्स अबाउट क्वेश्चनिंग, इन्वेस्टिगेटिंग। सो ये भी हमको छोड़ सकता है। सो बाकी क्या है, बाकी सिंपली साइंटिफिक टेम्पर है, साइंटिफिक टेम्पर है। And this word scientific temper is important guys, don't forget scientific temper, ठीक है। इसका डेफिनेशन एक बार और अच्छे से पढ़ लो, because this is important। क्यों, there are some documents important, maybe you guys have already heard about NEP 2020, National Education Policy 2020। actually BSc B.Ed is a brainchild of this NEP 2020। ये इसके बारे में हम बाद में बताऊंगा, so अभी छोड़ दे। लेकिन there are national curriculum frameworks, national curriculum, मेरा हैंड राइटिंग बहुत बुरा है गाइस, सॉरी। curriculum framework, NCF। So NCF 2005 is a very important document, and इसके बारे में they have given very more importance to scientific temper, ठीक है। scientific temper is a very important portion of this NCF 2025।
Okay, so the terms and things in these kind of documents are very important. Why? Because we are giving teaching aptitude question, and this is talking about how should the pedagogy of our teachers, like what to teach children, how to teach children. Okay, these documents are talking about that. That's why these are important, and scientific temper is important. Simply. So, Tana, yeah, I think it's time to end our video. Okay, and guys, uh, let me summarize. We were talking about the unit 3 science, and today we have discussed the logic based part. इतना सोचने का नहीं है, लेकिन थोड़ा confusing है, लेकिन फिर भी ठीक है. You just have to put the same logic, and I hope I have answered these comments. ठीक है. And if you have doubts like this, please let me know in the comment section below. I'll be trying to, me myself or our teammates will be trying to answer those, and the comments coming under my position, I'll definitely try to read those and try to address those. Okay. And I think yesterday I have solved all of your doubts. मुझे पता नहीं, maybe some of them are still unanswered. Sorry guys for that if you are still unanswered. लेकिन ठीक है, try करो. I try to improve my lectures after getting these kind of recommendations or feedbacks from you guys. ठीक ही है, उतना ही है. Study well guys. All the best for your examination. अभी 1 महीना बचा हुआ है. As I told before, ये strategy को थोड़ा देख लेना. उतना ही. And like one more thing I have to tell you guys, GT is very important guys. 25 क्वेश्चन आ रहा है, so इसलिए उसको भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा ही पड़ेगा. और लैंग्वेज आल्सो, लाइक लैंग्वेज पे ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस आएगा, लेकिन वो भी टीचिंग एप्टीट्यूड जैसे थोड़ा अच्छा क्वेश्चंस, लाइक अच्छा मतलब आसान क्वेश्चन आएगा. सम पोर्शन वो हमको करना ही है. तो या just give some importance to that also. That's all about it. Bye guys, study well. एक लाइक पहले भी बोल दिया था, and